Posting another video in our ECnG channel and हमारे साथ आज मिस्टर रविंदर कुमार है जो खुद एक नेवी सेगमेंट से बिलोंग करते हैं एंड ही इज़ बेसिकली एयरक्राफ्ट इंजीनियर एंड ये हमारे पास आए थे फॉर ईयरड्रम परफोरेशन एंड फर्स्ट डिस्चार्ज अलॉन्ग विद हियरिंग लॉस सो ही because of his age and the betterment of the ear, he advised, suggested us के want a non-surgical treatment, and उन्होंने हमारे YouTube पे search किया and then approached us, and we did ECnG on him, and his eardrum is completely fine, and he had a moderate to large type of perforation, और अब इनका hearing थोड़ा better हो गया है, थोड़ा सा इनको sensory hearing loss भी है, वो भी धीरे धीरे शायद recover हो जाएगा. और हमारे साथ मिस्टर रविंदर जी है. आप रविंदर जी अपना शेयर करेंगे हमारा एक्सपीरियंस. Thank you. Actually, I was having this problem since 3 to 4 years, and I approached in well-known hospitals, also private hospitals, but they could not do it. They only just made treatment for my leakage, this thing, pain, and everything was okay. And they opted only for operation with that. I was having that hole in my eardrum, and they told me that only the option for this is only operation, for which I was not at all willing to do it. So I searched on the Google and YouTube. I found one Mr. Ankur Gupta sir, then he is providing a treatment without any surgical operation. So I approached him, and he very politely explained me about the procedure, how it is undergoing only, and I have to regularly visit in this, and the treatment was an OPD treatment only. There was no any admission or any other type of treatment, no medication, nothing. So I was thinking I should go for it. So I undergone the treatment, and I did around 4 to 5 months. It became okay. And I am very fine, and there is no pain, nothing, and I am very thankful to Dr.Ankur Gupta sir that he has provided this treatment, and I appeal to the people, those who are having such problems, to approach Dr.Ankur Gupta sir, and 100% it will be cured. There is nothing enough to worry, and it is very economical also, as well as it is very lifelong treatment. थैंक यू मिस्टर रविंदर. आई थिंक आपका मैसेज जो मैं बोलने वाला था लोगों तक पहुंच गया होगा. आपका कॉन्फिडेंस भी लोगों को समझ में आएगा. काफ़ी लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि नो वन एल्स डू दिस प्रोसीजर, तो थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज आता है. बट आई थिंक विद द कमिंग टाइम एंड द एजुकेशन एंड ऑल एंड माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ऑल्सो एंड द यूट्यूब थिंग्स ऑल्सो, people will get to know this treatment and they'll definitely get benefit from this. बाकी जो लोग ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं हमारा ट्रीटमेंट, तो वो सर्जरी भी करा सकते हैं जो काफ़ी दूर है, जब तक ये हम लोग तक अप्रोच नहीं कर सकते. एंड बट लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि सर्जिकल नहीं है और ये बड़ा सेफ एंड साउंड ट्रीटमेंट है. This is a safe and sound treatment. It's a very easy treatment if I say. Only thing is we need few sessions to activate the growth and produce the result and all. So I think so many people are approaching us for the results, and I think आपका मैसेज और बाकी लोग आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हम लोग और अच्छे से. हमारा आशीर्वाद भी आपके साथ है कि आप इसमें जो है आप अच्छे से ट्रीटमेंट करें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, क्योंकि सबसे अच्छा सेफ और इकोनॉमिकल है. इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं. तो आई अप्रोच दैट एवरीबॉडी शुड प्लीज गो थ्रू इट, टेक इट दिस ट्रीटमेंट. थैंक यू सो मच.